Ladies and gentlemen, welcome to this online webinar. So we have a very good expert scientist, Miniza, who is a graduate of Department of uh, Statistical Sciences, and she is very good in bioinformatic analysis, and she is working on evolutionary relationship of different gene families in plants. In this research, she will focus on Lupinus albus. See over to Moniza Saklan and like तालियां इनके लिए. Okay, just wait. Okay.
मैं अभी ये किताब का आपने ना बिल्कुल इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। दिस इज व्हाट एक्चुअली आई वांट। आपने इसको पेपर में भी ऐसे लिखा है। अब अगर नहीं लिखा हुआ था इसको दोबारा से मॉडिफाई करके भेजो। आपका किसी अच्छे, अगर ऐसे ही इसको लिख दिया ना, अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल में आपका पेपर पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, और आपने ये जल्दी करके भेजना पेपरों के फौरन बाद। ठीक है, और इसको और इम्प्रूव करेंगे, इसको और अच्छा करेंगे। दिस इज व्हाट एक्चुअली आई वांटेड फ्रॉम यू गाइस। ठीक है, तो इसको बहुत इम्प्रूव करो और अपने अंदर नॉलेज और क्रिएट करो। तो दैट्स गुड बी अ ग्रेट। जी, वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस। ओके, कम। ओके जी, बुशरा, इसने कहा है कि LAINO जीन जो है वो, आपने क्या कहा है उसका सब सेलुलर लोकलाइजेशन, इसने क्या कहा है, वो किस में है? रीजा, इसको खोल के बताओ कि आप मुझे ये बताएं कि सब सेलुलर लोकलाइजेशन ऑफ LANO1 क्या है? मुनीजा, आपने बताया कि ये क्लोरोप्लास्टिक है। ठीक है, इसके अंदर यबी डोमेन है। ठीक है, क्या ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नहीं है? जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं उनकी सब सेलुलर लोकलाइजेशन क्या होती है? क्या होती है? जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं उनकी सब सेलुलर लोकलाइजेशन क्या होती है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो होते हैं उनकी सब सेलुलर लोकलाइजेशन कहाँ होती है? हाँ, डीएनए से जो आरएनए बनता है। डीएनए से आरएनए, उसी वो कहाँ होता है डीएनए से आरएनए? वो किस जगह बनता है डीएनए से आरएनए? न्यूक्लियस में। इट मीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की सब सेलुलर लोकलाइजेशन जो है वो न्यूक्लियर होती है। दिस इज एन इंटरेस्टिंग रिजल्ट यू गॉट। You say that LaNO1 is chloroplastic. Why? इसको एक्सप्लेन करें और कि why you got this type of, through, आपने नहीं, आपने सही प्रिडिक्ट किया है। Why the what we saw says that it is, its subcellular localization is chloroplast. अब आईएनओ का काम क्या होता है? सीड कोट बनाना। ठीक हो गया, ये क्या बनाता है? सीड कोट बनाना। अब सीड कोट बनाने के जब बन रहा होगा तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये प्रोटीन वहां क्या कर रही है? फॉर सीड डेवलपमेंट। मेरी मेरी बात समझ आ रही है? सीड कोट डेवलपमेंट के अंदर आप इस तरह के छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा सा जस्टिफाई भी करें कि ऐसा वहां क्यों हो रहा है। अच्छा, क्या और भी दुनिया में ऐसे आईएनओ है जिनकी क्लोरोप्लास्टिक सब सेलुलर लोकलाइजेशन है? तो वी नीड टू आंसर दैट। क्या है? रिसर्च पेपर में दिया, एक्सीलेंट। ये दिस इज व्हाट एक्चुअली आई वांट फ्रॉम यू गाइस। अब आपने इसको एनिमली ठीक हो गया। अब आपने कहा कि व्हाई देयर आर मेनी YAB टू जीन, इसको भी आंसर, देयर आर 14 जीन। इस 14 जीन आर प्रेजेंट इन ऑल सम अदर क्रॉप्स एज वेल और नॉट? ज्यादातर के न्यूक्लियस में है, लेकिन हेयर यू कैन सी दैट इट इज न्यूक्लियस। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन कौन सा? ये वाला LA। ठीक है, और बट ऑल दीज आर बिलोंग, ओके, एंड साइटोप्लाज्म में हो सकती है क्योंकि नॉर्मली द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, देन दे ट्रेवल टुवर्ड्स द, so there is a possibility that they may be present in, okay, but दोनों के अंदर हो सकते हैं। ये तो इनमें थोड़े थोड़े सबके अंदर साइटोप्लाज्म वाले भी सिग्नल्स हैं। इट मींस जब बाहर से स्टिमुलस आता है तो ये प्रोटीन जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं ये सेल के साइटोप्लाज्म में होते हैं। वहां से जो स्टिमुलस है वो उसको एक्टिवेट करता है, देन दे ट्रेवल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, और वहां जाकर उन जीन्स के एक्सप्रेशन को इनहांस कर देते हैं। और कोई स्पेसिफिक रिजल्ट जो आपके समझती हैं कि
हाईएस्ट अच्छा एलिमेंट्स इसमें आए हैं. इट मींस दिस जीन हैज मल्टी डायमेंशनल रोल. ओके. बिग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से ये एक्टिवेट होता है. इट स्ट्रेस से रिलेटेड है. ओके. Excellent. It means you can say that LAEFI might be involved in stress response, but you need to confirm that. वो कौन करेगा? वो बायोटेक्नोलॉजिस्ट करेगा. वो बायोटेक्नोलॉजिस्ट के कहेंगे अगर हम इस जीन को साइलेंस कर दे, इसको म्यूटेट कर दे, इसको डिलीट कर दे, फिर देखें प्लांट के ऊपर स्ट्रेस दिया जाए, अगर पौधा नहीं बचता स्ट्रेस के दौरान, इट मीन दिस आपने जो प्रोडिक्शन की है वो ठीक है. इट मीन्स योर प्रोडिक्शन इज एक्सीलेंट. साइंटिस्ट जो होते हैं ना वो कड़ियों से कड़ियां मिलाते हैं. रिसर्च में से क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ ढूंढ के उन सारे डिफरेंट पॉइंट्स को कनेक्ट करके उसको जोड़ते हैं. एक्सीलेंट. एक्सीलेंट. ये एट एबीए रिस्पॉन्सिव जीन. आपने फाइनल कंक्लूजन दिया है इसका हाउ एंड पे? क्या किया है आपका फिर फाइनल कंक्लूजन है? चलें जी. बेस्ट. थैंक यू मुनीजा फॉर योर काइंड एंड बेस्ट प्रेजेंटेशन.